Hi, this is Srilekha from Voice of Cargo and Logistics. We have Mr. Banerjee from the fraternity and the research for Government of India to upscale the scenario where we go global and very, very uplifted and a very, very progressive nation on multimodal logistics and further scenarios, associated industries, and much more. Over to you, sir. What I'm looking at is like there are challenges coming, right? Like there, because we have a different setup, different thinking, and of course, different mindset. Because as we say in our country, every state is an entity on itself. So, how do you look at it as a global scenario? Because what happens is like we do not have that, we cannot have a same mainframe like rest of the countries, like per se China, which is kind of an example. And rest of the countries, Taiwan and all that, including India, are trying to move forward to that because we have the potential, but we have to find out a win-win situation where people accept it as a new world and as a new option for livelihood, for industry, for a career. What is your take in that, sir? So you are referring particularly to logistics or to the export fraternity? Everything, export, import, because The these whole are all trade. related. Because this is all related. Because export, import, everything, trade deals, everything is part of logistics. Because that what runs the logistics. Yes. Absolutely, and I think it's a very fair question. But I think the last about 5-6 years, we have seen a lot change. We had the pandemic. We have a much younger, more connected demographic population today. You have second, third generation entrepreneurs who are much more savvy about information, global knowledge. And you also have, because of these shocks, what happened was that people were forced to move out of their comfort zones to look at different markets, this tariff shock or the geopolitical shock. So I think you have a much more entrepreneurial mindset today across the country. Even if you travel to small towns, industrial towns in Punjab, UP, Maharashtra, Tamil Nadu, you see a lot of that across even MSMEs. So there is an appetite for going global. There's an appetite for taking more risk. And I think the logistics fraternity in India is responding to that. They're trying to build those connectivity linkages with those markets, bring down the cost of exporting out of these markets to India. And that is exactly where the FTAs fit in. The entire purpose of the FTAs is to reduce both the cost of reaching those markets, the market access, but also bring predictability. Because the big challenge today the world is facing is predictability, right? We saw the Trump tariff shock. We have seen the geopolitical shocks. So what the FTA does is it, as gives you a certain market access, a certain tariff rate that is predictable, and that allows our businesses to grow and invest much faster. Right. Thank you, sir. Thank you for your time. And this is wonderful. This is a new insight I needed, fresh from you because you do all the researches then. What are you looking at? Like, what are your speculations that, the research and all these developments and all these advancements are going on in different fields, marginally increasing airports and ports and the capacity building. So do you think it will go stagnant somewhere or it will just grow? What is the think tank thinking? I think it's going to keep growing. I mean, I recall, almost now 20 years ago when they were planning for the new Delhi airport expansion, they had predicted 30 million passengers by 2030. We are in 2026, it's already 41 million. So you can imagine the scale we are giving. Right. So I think, in fact, we're under ambitious when it comes to the growth of logistics. In the last 10 years, we have gone from 2 cities with metros to 18 cities with metros. Right. You see the scale of highway building, we are doing one of the fastest in the world. I think the sky is the limit. We have two things in this country going for us. We have one of the youngest populations in the world, and we have a large domestic economy which gives economies of scale. Those two are winning combinations, and if we get our act right, there's no looking back So for the country. stagnation is not a threat. I don't think that's going to be a threat. Right, sir. Thank you very much, sir. Pleasure And is this mine. is Srilekha again. And we thank you, Mr. Dr. Pritam Banerjee, for his time and his insight into the research. Thank you, sir. Thank you very much. Very much.
छोटा सा सवाल हिंदी में भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ज़रूर। हाँ, कि जियोपॉलिटिक्स जो है वो तेज़ी से बदल रही है, कार्गो सेक्टर में भी बदलाव तेज़ी से हो रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, भारत को कहाँ देखना चाहिए अब अपने आप को, अगर हम पूरे जियोपॉलिटिक्स को देखें? देखिए, भारत को आज जो प्रयास होना चाहिए हमारे राष्ट्र को, ये है कि पूरे विश्व को अपने बाजार समझे। हमारे देश में आज 75,000 रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें सिर्फ 25,000 रेगुलरली एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उद्योगों का संख्या देखें तो वो 2.5 लाख से 3 लाख है। मतलब बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो सिर्फ घरेलू मार्केट में ही बेच रहे हैं। हमको चाहिए कि इनको प्रोत्साहन दे, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेशन करे, एफटीएस के माध्यम से मार्केट्स खोले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग जो यहाँ पे हमारे भारत में हैं वो विश्व के मार्केट में अपने जो हुनर है लेके जा सके। लॉजिस्टिक सेक्टर और कार्गो सेक्टर में स्किल्ड लोग कम मिल रहे हैं, उस तरह के नहीं है, क्योंकि मुकाबला आपका जब आप एक विश्व बाजार पूरी तरह से बन गया है तो उसमें स्किल्ड और जो भारत को जो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो लगातार जो भेज रहे हैं, उसके लिए क्या मानक होने चाहिए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस पर कहीं चुनौती आपको लग रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि चुनौतियाँ ज़्यादा थी 10 साल पहले। अभी हमारे स्केल इतनी तेज़ी से साथ बढ़ रहा है, और लॉजिस्टिक्स स्पेशली पैंडेमिक के बाद लोगों के मन में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का क्या महत्व है एक पूरे समाज में, वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, इसका इज्जत बढ़ गया है। तो सप्लाई चेन में भी आप बहुत सारे जो युवा हैं वो अभी इंटरेस्टेड हैं, वो आ रहे हैं, स्किल्स की भी सेंटर्स खुल रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 4-5 सालों में हमारे पास वी विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एज गुड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप तो रिसर्च टैंक हैं, एक रिसर्च करते हैं, कैसे देखते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर और कार्गो सेक्टर को अगर हम देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है आज ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। अगर मैं डेटा देखूं, आज से 15 साल 20 साल पहले बहुत फ्रैगमेंटेड हुआ करता था, छोटे छोटे एंटिटीज़ थे, आज ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। और मैं ये तो कहूँगा कि जो छोटे भी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्किल्ड बन रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए, अभी उत्तर भारत में आपको ऐसे ट्रकर्स मिलेंगे कि इसका फ्लीट साइज 10 या 12 ट्रक का है, लेकिन वो ऐप्स यूज़ करते हैं, ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ रेगुलरली व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो जो गैप था टेक्नोलॉजी और स्किल का, कि छोटे लोग नहीं कर पाते हैं, जो छोटे जिनका स्केल है वो नहीं कर पाते हैं, वो भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम हो रहा है। सो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू।